Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantab Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you Class 1 English textbook, workbook and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantab Publishers official website. We are going to start our lesson from Unit 7, The Boy Who Cried Wolf. And our topic is comma. SLOs of this lesson are recognize and learn the use of comma. Dear students, as we have discussed punctuation and punctuation marks in your previous lessons too, I hope you are familiar with it. Comma, full stop, question mark, exclamation mark, etc. These are the punctuation. We have discussed the capitalization, comma and full stop in your previous lessons too. So this is called punctuation. When we punctuate any writing, we put comma, we capitalize the first letter of proper noun or the first word of the sentence, and the first letter of the first word of the sentence we capitalize it, and add full stop when the sentence or statement is ended. The comma. What is a comma? It is used to express the shortest pause and is used to separate nouns. It is always used within the sentence, never at its end. For example, she saw a horse, lion, monkey and a tiger in the zoo. कॉमा कब हम यूज करते हैं? शॉर्टेस्ट पॉज होता है किसी भी सेंटेंस में, नाउन को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए. क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस में नाउन को लिस्ट करते हैं, डिफरेंट नाउन्स के बारे में बताते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं? कॉमा लगा के शॉर्ट पॉज लेते हैं, और ये लगाना बहुत जरूरी है, वरना सारी चीजें आपस में मिक्सअप हो जाएंगी. और हम इसे कभी भी सेंटेंस के एंड में नहीं लगाते. कॉमा को हम कभी भी सेंटेंस के एंड में नहीं लगाते. जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल है, शी सॉ अ हॉर्स, लायन, मंकी एंड अ टाइगर. अब हमारे पास कितने नाउन है? इधर हॉर्स है, लायन है, मंकी एंड टाइगर, 4 नाउन्स हैं. अब हमने इनको कॉमा लगा के क्या लिया? शॉर्ट पॉज लिया विद इन अ सेंटेंस. बट रिमेंबर दैट लास्ट वाला जो आपका नाउन होगा, जो आपकी लिस्ट में है, और उससे पहले वाला, बिफोर दैट यू हैव टू पुट एंड बिटवीन देम. आखिरी वाला नाउन और उससे पहले वाले नाउन के दरमियान आप क्या लगाएंगे? एंड का यूज करेंगे. बाकियों के दरमियान आपने कॉमा लगाना है. तो हमने शॉर्ट पॉज लेकर इनको, इन नाउन्स को सेपरेट किया है, जो कि है हॉर्स, लायन, मंकी एंड टाइगर. लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स. कॉमास इन अ सीरीज. अब सीरीज मींस स्टेटमेंट या सेंटेंस जिसमें हम नाउन्स या आइटम्स को सेपरेट करेंगे बाय एडिंग कॉमा. व्हेन यू हैव 3 or more words in a series, use a comma to separate the items. These can be nouns. You have 3. 2 के दरमियान हम क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे. लेकिन जब हमारे पास आइटम्स 3 हो जाएंगे, देन वी हैव टू पुट कॉमा बिटवीन देम, लाइक दिस वन. दीज कैन बी नाउन्स. सिर्फ हम नाउन्स को जो है सेपरेट करेंगे कॉमा लगा के. आज के लेसन में सिर्फ यही सीखेंगे हम. एडजेक्टिव्स को भी हम कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं, लेकिन आज के लेसन में सिर्फ हम नाउन्स को सेपरेट करना सीखेंगे विद इन अ सेंटेंस बाय एडिंग कॉमा. I need milk, bread and butter from the store. How many nouns do we have? Milk, bread and butter. ये हमारे आइटम्स हैं इस लिस्ट के. इस सेंटेंस में हमारे पास 3 आइटम्स हैं. लास्ट वाले और उससे पहले वाले को हमने क्या किया? इनके दरमियान एंड लगाया है. लेकिन सेकंड वाले से पहले हमने कॉमा लगाया है, बिकॉज वी हैव 3 नाउन्स. जैसे कि यहां पर मेंशन किया गया, इफ वी हैव 3 or more words in a series, we have to use comma to separate them. She bought shoes, dresses and bags. Dresses और बैग के दरमियान एंड लग गया, और ड्रेसेस और शूज के दरमियान क्या लग गया? कॉमा. 3 आइटम्स है हमारे पास. जैस्मिन, रोज एंड लिली आर माई फेवरेट फ्लावर्स. अब जैस्मिन, रोज और लिली क्या है? फ्लावर्स हैं. तो उनकी लिस्ट बनाई गई है और उनको सेपरेट किया है शॉर्ट पॉज लगा के. लिली इज द लास्ट वन एंड बिफोर दैट देयर इज रोज, सो दैट्स व्हाई वी हैव एडेड एंड हियर. एंड बिफोर दैट वी हैव add comma between the jasmine and the rose.
And the last one is cups, spoon, forks and plates are on the table. अब कितने आइटम्स हैं हमारे पास? प्लेट्स भी हैं, फोक्स भी हैं, स्पून भी हैं, कप्स भी हैं. तो इनको क्या किया हमने? कॉमा लगाया है, इनको सेपरेट किया है, शॉर्ट पॉज लिया है. We have separated the item by using comma between them. Plates and the forks. Plates is the last one and the forks is the third one. That's why we have added and here between them. And before that we have added comma between them. So that's how we separate the nouns in a list by taking short pause and we use comma. On page number 41, this one has been done for you. Insert commas in the following sentences. First one is done for you. I saw tiger, lions, monkeys and elephants in the circus. How many items we have? Tigers we have, lions we have, monkeys and elephants. See, elephants और monkeys के मिड में क्या है? एंड है, और बाकियों के दरमियान हमने क्या लगाया? कॉमा. 2 commas we have. और आइटम्स कितने हैं? 4 items. Let's do the rest too. B. We bought milk, butter, tea and sugar. अब कितने आइटम्स हैं हमारे पास? Yes, 4. Milk, butter, tea and sugar. So we will add comma after the milk, after the butter and after the tea or not? No, because sugar is the last one and tea is before that. So we have to add and here. The and is already there. See, Karachi, Peshawar, Quetta and Lahore are the capital cities. 4 items we have. So we will put here Karachi and Peshawar and we will add comma between them and the Peshawar and the Quetta. So Lahore is the last one here and is already here between the Quetta and the Lahore. D. They sold classical, modern and folk records. Classical, modern and folk records. अब क्लासिकल भी है, मॉडर्न भी है और फोक भी है. 3 आइटम्स है सिर्फ, तो सिर्फ क्लासिकल और मॉडर्न के दरमियान हमारा यहाँ पर कॉमा लगेगा. और फोक आखिरी है, तो फोक और मॉडर्न के दरमियान एंड इज ऑलरेडी देयर. सो दैट्स हाउ वी यूज कॉमा बिटवीन द नाउन्स. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 हियर, राइट द प्लूरल्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. प्लूरल क्या होता है? प्लूरल इंडिकेट्स टू मोर देन 1 आइटम. सिंगुलर इंडिकेट्स टू 1 single item or person. अब जो ये अंडरलाइन नाउन्स है, इसको आपने क्या लगाना है? सिंपल, वी हैव टू एड s in these singular nouns and make it plural. Like she ate the biscuits in the trees. She ate the biscuits in the trees. बिस्किट्स में एस लगा दिया और ट्रेज में एस ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गए? प्लूरल हो गए. उससे पहले क्या थे? सिंगुलर थे. नो एस हियर. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन इन योर प्रीवियस लेसन. इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन वॉच इट अगेन. जस्ट सिंपली एड एस एंड मेक इट प्लूरल. एंड यू वांट टू मेक इट सिंगुलर, just remove the s. B. The girl ran through the valley. Just simply add s in the girl and the valleys. The girls ran through the valleys. C. She left the key in her pocket. अब keys में s add करना और pockets में. Simple. Plural बनाना, ये singular है. He bought a tie and a jumper. Ties and jumpers. And this is your home task from workbook. Reading and writing activity we have. Guess where you will use comma in the following sentences. Request your siblings to help you. Then rewrite them by using comma. ये sentences हैं आपके home task के workbook पेज नंबर 32 से. वही rules आपने अपने mind में रखने हैं जो हमने अभी सीखे earlier in the lesson. आप पहले find out कर लें कितने items हैं. लास्ट और उससे पहले वाले के दरमियान तो एंड आ जाएगा जैसे कि इसमें है, और उससे पहले जो आइटम है और थर्ड वाले या सेकंड वाले के दरमियान आपने कॉमा लगाना है. इसी तरह आपने सारे सेंटेंसेस करने और रीराइट करना है इनको.
सिर्फ कॉमा ही नहीं लगाना, इनको रीराइट भी करना है इस स्पेस में. एंड दिस इज योर अनदर होम टास्क फ्रॉम वर्कबुक. लिसनिंग स्पीकिंग सेक्शन वी हैव स्पीक ट्रुथ. एक्टिविटी है कि हमने क्या है, कुछ भी हो जाए सच बोलना है. परफॉर्म एंड से दिस एक्टिविटी एट होम विद योर मदर एंड सिबलिंग्स. आपने परफॉर्म करनी है ये एक्टिविटी बिल्कुल इसी तरह की अपनी सिबलिंग्स, बहन भाइयों या मदर के साथ. मदर हु ब्रोक दिस ग्लास. सन, सॉरी मदर आई ब्रोक दिस ग्लास. बेटा क्या कहता है कि सॉरी मदर मैंने एक ग्लास तोड़ा है. मदर सेज ओह आर यू सेफ माई सन. मदर उनसे पूछती है कि आप सेफ हो, आपको चोट वगैरह तो नहीं आई. सन, यस मदर. मदर, माई सन यू शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स, वी विल बाय अ न्यू वन. मदर क्या कहती है कि आपको चीजों का ख्याल रखना चाहिए, हम नया गिलास ले लेंगे. सन थिंक्स मदर आई विल. दिस इज अ conversation between a mother and the son who broke the glass, and mother asked him who broke this glass and he spoke the truth. उसने क्या बोला, सच बोला कि उसी ने गिलास तोड़ा है. तो उसकी मदर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप अपना ख्याल रखें और हम नया गिलास ले लेंगे. और सन ने जो है रिप्लाई में क्या कहा, थैंक्स मदर आई विल, मैं ख्याल रखूंगा. So this is a very short activity you have to perform with your mother and the sibling at your home, and I hope you will do your homework. Thank you. Till next lesson. Allah Hafiz.